Today we are living in a world powered by chips. ये छोटी सी दिखने वाली chip. In today's era, it is so useful from the smartphones in our hands to advanced technologies like AI, autonomous vehicle, high speed communication. ये हर जगह यूज़ होती है. बट क्या आपने कभी सोचा है how these small chips which contains millions or billions of transistors is actually designed and fabricated? Today, we will understand how industry made this complex task into a simple small steps. We will know how the basic flow works, how the industry uses this basic flow to design a chip and then send to the foundry. So we can simply understand by having this block diagram that how a simple or some idea is converted into actual chip which is useful everywhere. So firstly we will talk about the pre-RTL flow, which is also called system level design. Then RTL to GDS, which contain logic synthesis and physical design, and this is the fabrication part. So system level design, or we can say pre-RTL flow. So system level design having like whatever we have some idea, तो हम उस आइडिया को इवेलुएट कैसे करेंगे. हमारे पास कोई भी अगर आइडिया है तो हम वो चेक करेंगे कि मार्केट के अकॉर्डिंग ये आइडिया की कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या मार्केट उस डायरेक्शन में जा रहा है जो हमारा आइडिया है. फर्स्ट वो हम चेक करेंगे. देन व्हाट इज़ द फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ऑफ दिस आइडिया. इज़ इट एक्चुअली फाइनेंशियली फिजिबल दैट जो कंज्यूमर इसको यूज़ करेंगे. और टेक्निकल फिजिबिलिटी कि इज़ इट एक्चुअली पॉसिबल टू मेक दिस idea into a final product. So this is the evaluation of idea. Then we move toward specification that okay हमारा idea evaluate हो चुका है, yes it can be made or it can be successful in the market. So after we will decide its specification, like इसके features क्या होंगे. PPA is nothing but power, performance and area. In the whole VLSI design we actually talk about these three factors which determine our circuit, that how it is, like इसकी power consumption कितनी है, performance speed measured in terms of speed, उसमें delay कितना आ रहा है, area also as we are moving towards the very compactness, like हर device very compact हो रहा है because of reduction in size. Today we are talking about 2 nanometer chips. So जैसे जैसे साइज़ कम हो रही है तो एरिया बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच ऑल्सो हैविंग रिलेशन विथ पावर एंड स्पीड ऑल्सो. देन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पार्टीशनिंग. हमें पता होना चाहिए हमारे कौन से कंपोनेंट्स हार्डवेयर में यूज़ होंगे, कौन से सॉफ्टवेयर में. सो दिस इज़ ओवरऑल सिस्टम लेवल डिज़ाइन. सो देन RTL to GDS flow which contain logic synthesis and physical design. Now this whole RTL or to netlist, that is logic synthesis, can be converted further into five steps. So RTL synthesis is nothing but just translating our RTL code. RTL code is register transfer level, which is simple Verilog और VHDL code. हम अपने डिज़ाइन को एक कोड के फॉर्म में लिखते हैं because it is not possible to have a schematic of very complex design. सो हम उसका एक डिजिटल फॉर्मेट में कोडिंग के फॉर्म में हम लिखते हैं विच इज़ सिमिलर टू सी लैंग्वेज जैसे हम सॉफ्टवेयर में करते हैं. सो RTL सिंथेसिस करेंगे उसका हम. RTL सिंथेसिस के बाद जेनरिक, अब यहाँ पे एक टर्म आता है जेनरिक लॉजिक गेट और स्टैंडर्ड सेल. सो जेनरिक लॉजिक गेट और स्टैंडर्ड सेल का डिफरेंस हम समझेंगे ऐसे, लाइक इफ देयर इज एन इन्वर्टर and here also we have an inverter, but internally we know its transistor configuration, like how these transistors are used here, what type of transistor are used. If we know this kind of information, like if we know the area of this gate, if we know the power of this gate and performance, then it is called standard cell. And we actually convert our RTL code into the standard cell netlist so that we can
After that, we can find its timing constraint, power constraint, frequency of that circuit, how it operate in the different condition. Because of that only, logic synthesis tool, this is the tool which require RTL code, library which contain standard cells, and the constraint, that is what is the design constraint, that is what is the timing constraint, सेटअप एंड होल्ड टाइम वायलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, और हमारी पावर जो हमने सेट की वो मैच हो रही है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो हमने सेट की है उसी के अकॉर्डिंग सर्किट ऑपरेट कर रहा है नहीं कर रहा. दैट इज़ ऑल द लॉजिक सिंथेसिस टूल डज. आफ्टर दैट इट विल कन्वर्ट इनटू द नेट लिस्ट. So this is whole about the synthesis part. Then we move toward the physical design. Physical designing is simply it is kind of back-end part of our chip design. So physical designing can be further divided into chip planning, placement, clock tree synthesis, global routing, ECO, and then further right GDS type. Okay. So chip planning is the first step. So what we do, we just partition our chip into सब सिस्टम और ब्लॉक. सो ये सिमिलर है जैसे हम कोई फ्लोर प्लान कर रहे हो हमारे घर पर भी, तो वो हम एक तरह से प्लान करते हैं कि कौन सा आइटम कहाँ रखा जाएगा. तो चिप में भी हम जो ब्लॉक्स होते हैं, लार्जर ब्लॉक्स, हम यूजुअली उनको लार्ज एरिया अलोकेट करते हैं और हम पहले डिसाइड करते हैं लार्जर ब्लॉक्स का, जिसको हम मैक्रोस कहते हैं. मैक्रोस में हमारा SRAM ब्लॉक्स भी आ जाता है, DSP स्लाइसिस भी आ जाती है. सो इनको हम डिसाइड करते हैं कि ये कहाँ प्लेस्ड होंगे. आफ्टर दैट हम उसके बाद आता है हमारा प्लेसमेंट. प्लेसमेंट मतलब जहाँ हम एक्चुअली स्टैंडर्ड सेल्स को प्लेस करते हैं. सो स्टैंडर्ड सेल को प्लेस करने की हम जैसे हम ASIC डिज़ाइन करते हैं उसमें 3 टाइप्स की आ जाती है, कस्टम, सेमी कस्टम IC, फुल कस्टम, एंड दैट सिंपली प्रोग्रामेबल ASIC. सो ये डिफरेंट है फिर भी, चलो. देन आता है क्लॉक ट्री सिंथेसिस. After placement of a standard cell, we move toward the clock tree. So clock tree synthesis, we decide the topology of clock network and how clock reaches each clock element. इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्लॉक ट्री सिंथेसिस का, कि देयर शुड बी मिनिमम स्क्यू. व्हाट इज स्क्यू? स्क्यू इज द डिफरेंस बिटवीन द अराइवल टाइम ऑफ क्लॉक बिटवीन वन एलिमेंट एंड अनदर एलिमेंट. सो देयर वी वांट zero skew ideal केस में, but in practical it is not possible. So we want to having a very minimized value of skew. And clock tree में there is some clock, if we made a very large network of clock, then it will consume large fraction of power. So we'll always want to clock network to be small so that our power should be less. After that, routing also, like we create a wire layout for all the nets. In this also we have an objective of minimum wire length so that less parasitic, so less power consumed, so better our circuit will be. Then comes routing. Routing is divided into global routing and detailed routing. Global routing is the planning stage of routing, that how we create the layout of wires and how a rectangular tiles is partitioned into the routing region and similar of this. Then आता है detailed routing, which we decide the actual layout, how each net flows in the pre-assigned global bins. Then we how router will actually route between the circuit blocks and all VRs also. After this, we have a GDS file which is sent to the foundry for the fabrication part. Now fabrication is done in the many steps, like first of all with the CZ method we create a single crystalline silicon wafer, silicon ingot. This is kind of silicon ingot. Then we slice into wafers, and after that we fabricate our wafer into the chips. That is done also by many step: photolithography, diffusion or ion implantation, oxidation, etching. Etching can further be dry or wet, and many other steps. And after that we have a final our chip product. In all these steps we do one step that is very necessary, that is testing. Testing is really important because it consumes first of all a lot of time. Almost 60% of our total chip designing and till fabrication, the testing consumes a lot of time, and it is very important for the manufacturer and for the in each and every step we do testing. Okay, so these are the basic steps that the industry follows
to have a better and optimized design and better and best quality product to be reach at our hands. Thank you.